हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट करेंगे इंग्लिश के नाउन्स, अदरवाइज कॉल्ड एज नेमिंग वर्ड्स. So noun is a word that represents a person, place, animal or thing. क्या है नाउन्स? जो कि कोई एक पर्सन को रिप्रेजेंट, एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, या प्लेस कोई जगह, या एनिमल्स और एनीथिंग. तो आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है? सर्कल द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यानी ये सेंटेंस में आपको नाउन कौन सा है हमको आइडेंटिफाई करना है और उसको सर्कल करना है. दिस इज ए ब्लू पेन. इन दिस सेंटेंस दिस इज ए ब्लू पेन. तो पेन क्या है? एक थिंग है. ओके. द डॉग इज बार्किंग. डॉग क्या है? एक एनिमल है. सो ये एक नाउन है. ए पैरट इज सिटिंग ऑन ए ट्री. पैरट ये बर्ड, ये एनिमल है, ऑन ए ट्री. द रेनबो इज ब्यूटीफुल. सो नाउन क्या होगा? रेनबो. ओके. ईटिंग वेजिटेबल्स इज गुड फॉर अस. ये थिंग है. कौन सा? वेजिटेबल्स. रोहन हैज ए पेट डॉग. रोहन नेम ऑफ ए बॉय. सो रोहन इज ए नाउन, हैज ए पेट डॉग. ओके. द बॉय इज राइडिंग ए बाइसाइकिल. द बॉय ए पर्सन, इज राइडिंग ए बाइसाइकिल, ए थिंग. माई फादर इज ए टीचर. फादर, फादर ए पर्सन, ए टीचर. The cat is sitting on the mat. Cat, animal, sitting on a thing, that is mat. My teacher is very nice. So, teacher. ठीक है? Next. Read the clues and write the nouns. आपको कुछ क्लू दिया गया है, उसमें से आपको क्या करना है? नाउन लिखना है. I am the king of the jungle. Who is the king of the jungle? Lion. Lion. You come to me to study. It is a place. It is school. SCHOOL. I help you feel better when you are sick. हम जब बीमार होते हैं तो हमको कौन बेटर फील कराते हैं? डॉक्टर. ओके. नेक्स्ट. माई बेबी इज कॉल्ड ए किटन. किसके बेबी को किटन बोलते हैं? कैट. आई टीच यू न्यू थिंग्स एवरी डे. हु टीचेस यू न्यू थिंग्स एवरी डे? टीचर. I tell the time. Clock. I lend you many books to read. Library. Next, make naming words or nouns from the jumbled letter. You are given some jumbled letters. You have to form the naming words. This one is Delhi. Name of a place, which is our capital, that is New Delhi. Okay. This one is sister. SISTER. And this one is school. It is boat. Next, it is river. Okay. Thank you. Have a nice day.